विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralavani Community Radio, Sangli, Maharashtra. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। You're listening STEM Popularization Podcast. In today's world, petroleum energy has huge significance in development of any country. Dr. Neelam Kapase, working on process in oil recovery from high temperature oil refineries. Her research is on petroleum biotechnology. She has joined as a scientist B in biology group of Agarkar Research Institute. Let's hear more briefly from Dr. Neelam Kapase on her research contributing in making India energy efficient. Hello everyone, I am Dr. Neelam Kapase. I have recently joined as Scientist B in Bioenergy Group of Agarkar Research Institute. So before joining as Scientist B, I did my PhD in petroleum biotechnology, and my PhD work was on studying the influence of reservoir properties on microbial enhanced oil recovery. So during my PhD, I developed a microbial process for enhancing oil recovery from high temperature oil wells located in Gujarat. So this research holds great significance to the common man as well as to India. I feel by integrating biotechnology into petroleum industry, we can make processes which are more efficient and environmental friendly. This will not only contribute to India's energy security, but it will also align with the global sustainability goals. So imagine cleaner and more affordable energy solutions for everyone. मेरा रिसर्च मतलब जहाँ तक कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं, ये तो एक हद तक ये एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग भी है, साथ ही साथ ये बहुत ही एक्सपेंसिव और एनर्जी इंटेंसिव होती है. मेरे प्रोसेस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव और न्यूट्रिएंट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं. तो जहां तक हम अगर प्रोसेस इन्वेस्टमेंट देखें तो हमें ओनली, जहां तक मैंने कैलकुलेट किया है, हमें ओनली 3 लाख तक इन्वेस्ट करना होगा. बट जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, हमें लगभग 6 गुना प्रॉफिट होगा इससे. तो मुझे लगता है कि यह पेट्रोल की प्राइसेस कम करने में काफी मददगार होगा. सो मेरा जो रिसर्च है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्टिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. तो पास्ट में जो टेक्नोलॉजीज थी वो मैंने जैसे बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रोसेसेस रहते थे. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में इनहेरेंट प्रेशर जो रहता है रिजर्वायर का, उससे हम तेल को ऊपर पुश करते हैं जिससे ऑयल रिकवरी हो जाती है. सेकेंडरी प्रोसेस में हम लोग वाटर को इंजेक्ट करते हैं जिसमें सी वाटर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इंजेक्टर वेल से हम इंजेक्ट करते हैं और प्रोड्यूसर वेल से ऑयल बाहर आ जाता है. बट प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस को मिला के भी हम ओनली 20% ऑयल को ही हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स 80% इज स्टिल रिमेनिंग ट्रैप्ड इन द रिजर्वायर. तब हम टर्शरी प्रोसेसेस की तरफ बढ़ते हैं. टर्शरी प्रोसेसेस में केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. केमिकल्स एक तो बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव, एक्सपेंसिव और एनवायरमेंटली पोल्यूटिंग होते हैं, और यह मुझे लगता है कि 40% तक ही तेल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं. डेवलप किया है हमने एक ऐसी माइक्रोबियल प्रोसेस को जिसमें हमने ऐसे सूक्ष्म जीवों को आइसोलेट किया है जो कि उच्च तापमान पे बढ़ सके. इसके साथ ही हमने एक ऐसे पोषक माध्यम का इस्तेमाल किया है
जो कि इन हाइपरथर्मोफाइल्स की ग्रोथ को बढ़ावा दे सके। तो हमारे जो हाइपरथर्मोफाइल्स हैं, जिसे हमने आइसोलेट किया है ऑयल रिजर्वायर से, ये बहुत ही नोवेल टाइप के हैं और इनके साथ जो हमने थर्मोस्टेबल न्यूट्रिएंट मीडियम डिवाइस किया है, इसे हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू इंजेक्टर वेल इनटू द ऑयल रिजर्वायर। इसे हम 14 दिन के लिए बंद कर देते हैं। 14 दिन में यह सूक्ष्म जीव, क्योंकि ये हाईली मोटाइल होते हैं, तो वह छिद्रों और क्रिवाइसिस से पहुंच प्राप्त करते हैं जहां पे इन द ऑयल रिजर्वायर, जहां पे क्रूड ऑयल प्रेजेंट होता है। और वहां जाकर ये सूक्ष्म जीव कई प्रकार के मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एसिड्स, गैसेस, एक्सोपॉलीसैकेराइड, बायोसर्फैक्टेंट। सो ये सारे मेटाबोलाइट्स जो रहते हैं, ये कॉम्बिनेशन में एक्ट करते हैं ईदर ऑन द रिजर्वायर प्रॉपर्टी। रिजर्वायर प्रॉपर्टी बोले तो पोरोसिटी। तो जैसे रिजर्वायर रॉक जो होता है वो काफी पोरस नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल फ्लो नहीं कर पाता है। तो जो मेटाबोलाइट्स जैसे कि एसिड्स रहते हैं, वो पोरोसिटी को बढ़ाते हैं ताकि क्रूड ऑयल इजीली फ्लो हो सके। You are listening to STEM Popularization Podcast. Dr. Neelam ji explained the process of efficient oil recovery from refineries and the role of microbes in reducing the cost of this process. The whole process is developed by keeping the environment and other circumstances of refineries in mind. Now we will understand the significance of this research in global perspective from Dr. Neelam ji. So India's biotechnology sector, it holds almost 3% share globally and it ranks 12th worldwide and 3rd in Asia Pacific. As of now, India is steadily gaining recognition in the field of petroleum biotechnology. बट मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्ट्रेस करना चाहूंगी, जो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है ARI में, वो टेक्नोलॉजी काफी यूनिक है, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हाई टेम्परेचर ऑयल वेल्स, जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री से ऊपर है, ऐसे तापमान वाले कुओं में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं, उनका लिमिटेशन यह है कि वो ओनली ऑयल वेल्स जिनका टेम्परेचर 80 डिग्री से कम है, उसमें ही वो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे हाई टेम्परेचर ऑयल वेल्स इंडिया में काफी है, जहां हम अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑयल को बाहर निकाल सकते हैं। There are many contemporaries in the field of petroleum biotechnology, including research groups within as well as outside India. So, with the exception of research efforts by a handful of research groups like OTBL, which is a joint venture by TERI and ONGC, then BHU, IIT Kharagpur. So, there have been no significant nationwide initiatives in this petroleum biotechnology sector. So, I feel the presence of healthy competition can serve as a catalyst for collaboration, fostering the exchange of idea and advancement for the collective progress of this field. We have been associated, our group, that is Bioenergy Group from ARI, has been associated with ONGC, IEOT, OECT, which are PSU, which are petroleum giants in India. So, collaborations with such petroleum companies, refineries, ensure that our findings are translated into practical applications. So, we are obviously looking for more collaborations from Bharat Petroleum, from IOCL. We have collaborators. I was not associated directly with the trial process, but 10 years back, we had implemented this technology in an oil field in Gujarat, wherein oil recovery was almost 100% by using this technology. And the profit that was gained was 10 times more the amount that was invested. So, the technology that I am working on, we have tried it in laboratory simulations and looking at the promising outcomes that we have got. We are in process of implementing these technologies in different oil fields from Gujarat as well as Assam. We have filed a patent for MEOR and it is in collaboration with IRIS ONGC. I have total 14 research publications in different international peer-reviewed journals. So I have publications related to this microbial enhanced oil recovery in a journal named as Anthony van Leeuwenhoek. So our study is very novel and unique in terms that we are the only group of researchers who have published genomic insights into this oil recovery technology. And also we are the first one to try this technology at a temperature of 101 degrees Celsius. I feel like there are many scopes to improve because every reservoir is unique. So I feel technology which is reservoir compatible, which is reservoir tailored, should be developed. So I feel in terms of reservoir engineering, we can do a lot of studies
and we can do a lot of advancement in that field and make this process highly successful. Thank you so much for having me here today. It was a pleasure talking to you, and I would like to thank Department of Science and Technology and ARI for providing me with this opportunity to take my research experiences to the common public. Thank you so much. Thank you, Dr. Neelam Kapase ji, for joining us on this platform. आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.